Hi everyone, it's me, your Manu Issue, and welcome back to my YouTube channel Manu Issue ACC classes. So in this video, I'm going to do psychomore question. This one is from the Copland kit of F8. So if you are watching my video for the first time, don't forget to hit the subscribe button as well as bell icon for more updates. Okay, so in this question, the question have a four requirement and the most of part is knowledge based, so I must say you guys to just go and read the books in order to tackle this knowledge based question. So in this video I'm only going to discuss the part B, the audit risks and the response, uh, and make it easy for you. So let me do this first for you, then I will explain. Okay, so let's read out the scenario first. It's a 1st July 20x5. You are a audit supervisor of Maple and Co. and currently planning the audit of existing client Sycamore Science Co. Sycamore, whose year end was 30 April 20x5. Sycamore is a pharmaceutical company which manufacture and supply a wide range of medical supplies. The draft financial statement show revenue of 35.6 million and profit before tax of 5.9 million. During the year, a review of plant and equipment in the factory was undertaken and surplus plant was sold, result in the profit of on disposal of 210,000. Sycamore previous finance director left the company. Okay. So now we have identified the first audit risks, and that's in the second paragraph. Means during the year, a review of plant and equipment in the factory was undertaken, and surplus plant was sold, resulting in the profit on disposal of 210,000. So first we will identify the risks, and the risks we have been identified. Just copy paste from the scenario as I have done this for you. uh, then after that we have to explain relevant ISA or anything what should be in this place, like जैसे कि अब यहाँ पे प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात कर रहा है, लाइक प्रॉफिट हुआ है डिस्पोजल करने पे. सो एज पर IAS मैं रेफरेंस ले रही हूँ आइजा का. सो एज पर IAS 16 PPE मीन्स property plant and equipment depreciation method and useful life of assets should be reviewed annually and revised if necessary. Okay, and significant profit, और अब इसको ना एक्सप्लेन करना है. सो जो भी रिस्क हम लोग ने आइडेंटिफाई किया है, मीन्स वॉट एवर रिस्क वी हैव आइडेंटिफाई, नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द आइजा एंड व्हाट विल बी द लाइक consequences. So significant profit on disposal of asset indicate that depreciation policy of Sycamore is not appropriate. So if it is so, अगर ऐसा हुआ तो there may be a possible risk that your depreciation might be understated and PPE might be overstated. Okay, so उसके बाद अब हम लोग रिस्पॉन्स लिखेंगे. रिस्पॉन्स में क्या लिखेंगे कि डेप्रिसिएशन पॉलिसी को रिव्यू करो सो दैट वी विल असेस इस रीजनेबलनेस, और फिर से प्रॉफिट कैलकुलेट करके देखो. राइट, सो दिस विल बी आवर ऑडिट रिस्पॉन्स. Coming to our next risk, let's read out the scenario. Sycamore previous finance director left the company in the December 20x4 after it was discovered that it had been claiming a fraudulently expense from the company for a significant period of time. Okay, so here is a audit risks. The first step is to identify the audit risks, and which we have identified. Just copy paste from the scenario. Okay, so I have done this for you. After it was discovered that finance director of the Sycamore has fraudulently claiming the expense from the company, he left the company in December 20x4. This is just copy paste from the scenario, nothing else. And now we have to explain these risks. द फुल अमाउंट ऑफ फ्रॉड नीड टू बी आइडेंटिफाई. यहाँ पे अगर फ्रॉड हुआ तो क्या होना चाहिए, जो भी फ्रॉड का अमाउंट है उसको क्वांटिफाई करके शुड बी रिटन एज एक्सपेंस इन द P&L. ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या कंसिक्वेंसेस होंगे. सो देयर इज अ पॉसिबल रिस्क दैट प्रॉफिट माइट बी ओवर स्टेटेड. हो सकता है एक्सपेंस ना लिखे, एक्सपेंस नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट विल बी ज़्यादा ओवर स्टेटेड, आई मीन. अब इसके लिए रिस्पॉन्सेस.
Discuss with the management regarding the procedure adopted for the identification of the fraud and ensure that amount quantified should be written as expense in the P&L. So discuss करो management से regarding the what procedure they have adopted regarding the identification of this fraud and ensure that whatever the amount quantified during the fraud should be written up as expense. Or you can write the maintain professional skepticism and being allowed to the risks of like this kind, the risks of fraud. You can also write this. Okay, so next paragraph. A new finance director was appointed in January 20x5 who was previously a financial controller of a bank, and she was expressed surprise that Maple and company had not uncovered the fraud during the last year audit. Okay, so मैंने इसको लिखा नहीं है, हालांकि वी कैन राइट दिस एज ए ऑडिट रिस्क. अब यहाँ पे रिस्क क्या है कि न्यू फाइनेंस कंट्रोलर अपॉइंट किया है. ऑब्वियसली कॉपी पेस्ट सिनेरियो से करेंगे कि न्यू फाइनेंस डायरेक्टर वाज अपॉइंटेड इन जनवरी 20x5 हु वाज प्रीवियसली ए फाइनेंस कंट्रोलर ऑफ ए बैंक. सो देयर हियर इज रिस्क कि जो फाइनेंशियल कंट्रोलर अपॉइंट हुआ है वो बैंक में पहले काम करता था, और जो ये साइकोमोर है वो कौन सा है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है ना, राइट, जो मेडिसिन को सप्लाई करती है. सो डिफरेंट इंडस्ट्रीज है, राइट, वहाँ पे हमारा ऑडिट रिस्क आता है. तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि ये फाइनेंस डायरेक्टर या फिर ये फाइनेंस कंट्रोलर शुड हैव ए लाइक शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ, है ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए. अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस्टेक हो सकते हैं, एरर हो सकते हैं. And response will be same. Discuss the management regarding the competence and capability of this like finance controller का, so that कि हम लोग इंश्योर कर सकते हैं कि फाइनेंस स्टेटमेंट में कोई एरर और या मिस स्टेटमेंट ना हो. ओके, आप ये भी लिख सकते हो, मैंने लिखा नहीं है, हालांकि यू कैन फाइंड मेनी मोर ऑडिट ट्रिक्स एंड ऑडिट ट्रिक्स इन द सिनारियो, बट यू हैव टू ओनली राइट द 8 and be sure that you write only those audit tricks in which you are comfortable. Okay, so next paragraph. During the year, Sycamore has spent 1.8 million on developing several new products. These projects are at different stages of development, and draft financial statements show that full amount of $1.8 million within intangible assets. अब here is the audit risk. अब पहले तो identify करना है, and we have identified कि यहाँ पे audit risk है, and we will explain. I mean, just copy paste from the scenario. In the identification part, his Sycamore has spent 1.8 million on developing several new products and which are at different stages, and all of this cost has been capitalized as a intangible asset. अब यहाँ पे अगर आइजा का रेफरेंस है तो व्हाट इज द एप्रोप्रिएट आइजा फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, IAS 38. तो IAS 38 क्या कहता है, सो एज पर IAS 38 ओनली दोज कॉस्ट आर कैपिटलाइज विच मीट एक कैपिटलेशन क्राइटेरिया, है कि नहीं. सो अब यहाँ पे क्या होगा अगर ये 1.8 मिलियन कॉस्ट को कैपिटलाइज करते हैं एज ए इंटेंजिबल एसेट. So if the 1.8 million does not meet the capitalization criteria, so there is a possible risk that the development intangible assets might be overstated and their research expense might be understated. ये हम लोग एज एक्सप्लेनेशन पार्ट लिख सकते हैं. सो अब रिस्पॉन्स में क्या होगा, रिस्पॉन्स में होगा कि डिस्कस विद ऑब्टेन द ब्रेक डाउन ऑफ $1.8 million एंड वेरीफाई वेदर इट्स मीट कैपिटलेशन क्राइटेरिया और नॉट. इफ नॉट देन रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू मेक एन एडजस्टमेंट. आप ये भी लिख सकते हो. और यू कैन राइट ऑब्टेन द ब्रेक डाउन ऑफ $1.8 million कॉस्ट एंड वेरीफाई वेदर इट मीट द कैपिटलेशन क्राइटेरिया एंड इंश्योर इट्स ट्रीटमेंट इज इन अकॉर्डेंस टू IAS 38. You can write this one also. Okay, okay, so next है हमारा okay, in order to fund this development 2 million was borrowed from the bank and it is due for repayment over 10-year period, and the bank attached the minimum profit target as a part of the loan commitment. अब यहाँ पे 3 रिस्क अराइज होगा. मैंने 3 रिस्क यहाँ पे ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई किया. द फर्स्ट इज द लोन अमाउंट. ठीक है, तो लोन अमाउंट में आप आइडेंटिफिकेशन के पार्ट में क्या लिखोगे, द कंपनी हैज साइकमर कंपनी हैज बोरोड ए $2 million लोन फॉर 10-year पीरियड. अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे. दिस लोन अमाउंट शुड बी करेक्टली स्प्लिट बिटवीन द करेंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करेंट लाइबिलिटीज. ठीक है, एंड इसके रिगार्डिंग डिस्क्लोजर भी हम लोग को देना होगा डिस्क्लोजर नोट्स में.
अब नहीं हुआ तो क्या होगा? सो देर इज अ पॉसिबल रिस्क दैट दिस अमाउंट माइट बी इनकरेक्टली स्प्लिट बिटवीन द करेंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करेंट लाइबिलिटी, और इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर माइट बी मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी लिख सकते हैं। अब इसके लिए रिस्पॉन्स क्या होगा? Obtain the breakdown of the 2 million loan and ensure it is correctly split between the current and non-current liabilities, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। and ensure and correct disclosure is made in the disclosure notes by the management, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। ओके, दूसरा होगा आपका यहाँ पे लाइक इंटरेस्ट। अब यहाँ पे जब हम लोग डेप्ट अमाउंट ऐड करें तो ऑब्वियसली हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट भी बढ़ेगा। सो इंक्रीज इन द लोन अमाउंट विल ऑल्सो लीड टू द इंक्रीज इन द इंटरेस्ट पेमेंट, ये हमारा आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। और इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? सो दिस शुड बी रिकॉर्डेड एज ए फाइनेंस कॉस्ट इन द PNL। सो इफ नहीं करेंगे तो क्या होगा? सो इफ नॉट रिकॉर्डेड देन देर इज पॉसिबल रिस्क दैट इंटरेस्ट एक्सपेंस माइट बी अंडरस्टेटेड एंड प्रॉफिट माइट बी ओवरस्टेटेड। सो अब इसके लिए रिस्पॉन्स क्या होगा? सो रिकैलकुलेट द इंटरेस्ट चार्ज एंड इंश्योर दैट सेम हैज बीन चार्ज टू द PNL। ये हम लोग को कंफर्म करना है कि बस वहाँ पे वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करो और इंश्योर करो कि वो चार्ज हो चुका है PNL में। अगर नहीं तो मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करो एडजस्टमेंट करने के लिए, सिंपल। ओके, नाउ थर्ड वन यहाँ पे हो जाएगा लोन कन्वीनियंट। अब यहाँ पे क्राइटेरिया बैंक ने अटैच कर दिया है दैट देयर शुड बी ए मिनिमम प्रॉफिट इन ऑर्डर टू गेट दिस लोन। अब ये हमारा हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन पार्ट में, जस्ट कॉपी पेस्ट फ्रॉम द सिनेरियो। इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? लाइक as there are loan convenient attached, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? एज द मिनिमम प्रॉफिट टारगेट हैज बीन अटैच्ड टू द लोन, सो मैनेजमेंट माइट मैनिपुलेट द प्रॉफिट फिगर्स इन ऑर्डर टू गेट द लोन, सो देर इज अ पॉसिबल रिस्क दैट द प्रॉफिट माइट बी ओवर स्टेटेड, है कि नहीं? और उसके बाद इस यहाँ पे फिर हम लोग वहाँ पे रिस्पॉन्स में लिख सकते हैं, मैंने शायद किया हो, जस्ट वेट है, या आई हैव डन दिस फॉर यू। Maintain professional skepticism on judgmental area and where decision is likely to be manipulated by the manager। और या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, maintain the professional skepticism on revenue recognition, नहीं, ओके, maintain professional skepticism and रुको मैं करेक्ट करके बताती हूँ। So now you can write maintain professional skepticism and be allowed to the revenue recognition, use a judgmental area that might affect the profit। ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप। ओके, सो नेक्स्ट इज आवर, आई थिंक मैंने 7-8 तो बता दिया ऑडिट ट्रिक्स, काफ़ी इसमें है, जस्ट गो थ्रू द सिनारियो, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, सो एक और डिस्कस कर लेते हैं। New finance director has informed that audit partner that since that year in there has been increase in the number of sales return, and that is in the month of the May over 0.5 million of goods sold in the April were returned। So this is the identification part, just copy paste from the scenario। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो सेल्स रिटर्न इंक्रीज हुआ है, हम लोग को this should be added to the inventory and sales should be reduced with the same amount। ठीक है, सेल्स रिटर्न हो रहा है तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो व्हाट हैपन, आवर इन्वेंट्री माइट बी अंडरस्टेटेड एंड सेल्स रेवेन्यू माइट बी ओवरस्टेटेड, ये हो सकता है। सो इसके लिए हम लोग को रिस्पॉन्स में रिव्यू द पोस्ट ईयर इन सेल्स रिटर्न एंड इंश्योर इट इज रिलेटेड टू द प्रायर ईयर इन सेल्स एंड इंश्योर सेल्स रेवेन्यू हैज बीन रिवर्स सो हैव बीन इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री। आप ये भी लिख सकते हो एज अ रिस्पॉन्स। सो इन दिस वीडियो आई विल डू only audit tricks and response part, and rest is theoretical, just go and read the book, you will get the answer of the rest of the knowledge based question। So thank you so much guys for watching my video, have a good day।